So he's explaining about meeting and separation. Can translate but no transmitter. Yeah, I can speak it. So we're talking about Nam Bhajan, which is connected to Deep Bhajan. So we remember about Leelas while chanting the holy names. We realize our form of Krishna's eternal servant while chanting the holy names. Ajata-rati Sadhak and Jata-rati Sadhak. So Jata-rati Sadhak, he practices spiritual practice and he remembers the Leelas of serving Srimati Radha and Sri Krishna. Like he's gone and come, so he's remembering about the Leelas of Sri Radha and Krishna. So while chanting the first and second section of the Hare Krishna Mahamantra, there is meeting. So it's a combination of meeting and separation. We keep chanting the holy names under the guidance of pure devotee, Shuddha-bhakti. And then our heart gets cleansed and all the moods manifest in our heart. So this is all being explained here. So while chanting the holy names, we serve Krishna in full form of ourselves. So, so we remember about the leelas of the meeting of Sri Radha and Sri Krishna. And at times we also remember the pastimes of their intense separation. Transmitted. So in the seventh section of the holy name, there is separation. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna. In the eighth section, so the sadhak is imagining the mood of gopi, getting absorbed in the mood of gopi, and then trying their best to serve Sri Radha and Sri Krishna. So there's like combination of separation and meeting in the chanting of the holy names. So the third and seventh section. In the third and seventh section, there's separation, and the rest of the sections, it's about meeting. So we just have to remember this: 3 and 7.
Hare Krishna. So first, second, it's like meeting, and then Krishna Krishna, that's like separation. So the third section is mood of separation, and then in seventh they will meet again. सेवेंथ में मीटिंग है. अच्छा, बाकी सब में थर्ड और सेवेंथ में सेपरेशन, बाकी में मीटिंग. So who has interest and deep attachment to the Lord, only they will imagine leelas like this. So only they will think about these moods of meeting and separation. So people say if you don't eat a lot, well, eat pakoras on Ekadashi, then it's not Ekadashi. Pakoras on Ekadashi, like ashraya-vritti. So devotee reaches a stage while proceeding further in spiritual life. So it's like ashraya-vritti. So try and remember the technical words. Huh? I need you to give it to Chandani or probably Chandani. Do you know who she is to translate later? Who's Chandni? Chandani, she's a Delhi woman from Delhi. Actually, you can give it to Radhakanti and tell her to give it to Chandani. For outside translation. Huh? Outside translation. Yeah. Because we have to do the dance now. Sva-samvedya-dasha is a stage where the devotee reaches while practicing spiritual practices. So it's like having intense, pure self-realization. So nobody has to tell themselves. So for example, if you eat sweet, what is the sweet? Sweet is a sweet. So so means I. So having self-realization and everything comes from within. And then it's Java-ashraya-vritti. Javat-ashraya-vritti. So all types of ingredients of the bhakti or spiritual process, they all manifest themselves in the heart of the devotee. So all the ingredients of bhakti get manifested automatically in the heart of devotee. So all types of ingredients like Vibhava, anubhava, sastik, vyabhichari. Vibhava. So there are two types of Vibhava. Ashraya, Alamban and Hriday Uddipana. Alamban and Uddipana. So there are two types of Alamban. Asraya-alamban and Uddipana. So from ordinary perspective, so there are four types of ingredients. Vyabhichari, asakti, vyabhichari. So it's like our mood gets vibhavic.
So we see Krishna. So we have two types of things arising in our heart, which is Transformation arises in your body. transformation arises in our body automatically. Listen, nobody's listening here. Krishna will say. So when the heart of the sadhak, they have like a first vikar, like a doubt, a transformation change that comes in our heart automatically. Krishna Vrishek. The first thing that changes, first transformation that happens within the heart. For example, if you see the lover, you hear the name of your lover, what happens in your heart? You feel joy in your heart, you feel enjoyment, you feel happy. So the person who you love, when you hear their name, when you hear about their work, hear about them, what happens? Your heart transforms. You feel joy. So that's why we are saying. So with Krishna Abhishek, the first transformation that sadhak will go through is Vibhava. that is known as Vibhava. Understand or not? So, so one is Alamban and second is Uddipana. So one is Alamban and other is Uddipana. So when Alamban happens, so the two things Alamban and Uddipana. One is asraya-alamban and second is visaya-alamban. So Krishna, from ordinary perspective, so it's always visaya-alamban. So Krishna is top first. So but in some sections, the mood is really deep and high. When the mood is really deep, that's visaya-alamban. It's like combination of service of Sri Radha and Sri Krishna. So it's like the mood of Manjari gets manifested. And sometimes Radha and Krishna they have Vishaya-alamban. And Manjaris go to Ashraya-alamban at that time. And for example, saying Radha Krishna Pranam or Yugal Krishna. So it's like Radha Krishna, they're saying for the both of them. What's happening to both of them? It's like Vishaya-alamban. So in normal vichar, normal there's only Krishna. There's only Krishna. But when Manjaris are doing seva, at that time, Radha, Krishna, they both are in Vishaya-alamban. They both are being referred. Ashalam. And Manjaris at that time do Ashraya-alamban. So Radharani is unified with Shri Krishna, and that is Vishaya-alamban. So the Radha Krishna Pranam or Yugala Kishore. Narottam Das Thakur. So what is Narottam Das Thakur is doing? He's absorbed in deep Manjari mood. He's saying Radha Krishna Pranam or Yugal Kishore. It's like Yugal Kishore, both of them together. And what are Manjaris? They are going in Ashraya-alamban. So this is the thing. Vibhav, Anubhav. Sattva. So there are two types of Vibhav, Alamban and Vichavalamban. And there are then two types of Alamban, Acharya-alamban and Vrishya-alamban. So Krishna is always in Vrishya-alamban.
So it's like object of the divine love. He's like completely objectified towards the divine love. दोनों ही जो है राधा कृष्ण दोनों ही But विषय sometime आलम्बन हो जाता है। when there's Radha and Krishna और together, it's सारी मंजरियां visaya-alamban. जो है And at that आश्रय time, आलम्बन हो जाती Manjris fall into the category है। of ये कैसे किया asraya-alamban. हैं? बोलते अरे राधा कृष्ण प्राण That's why they're saying Radha Krishna युगल Pranamori Yugal जीवने Kishore मरणे मोर गति नहीं Yugal Kishora Jivane Marane नतिया Gati मालती माला टीप तुम्हार गति तुम्हार माने Natya I Arti offer the Mala. He's garlands saying I to offered the the garlands ठाकुर divine love to करा the रहे divine couple, Sri Radha and Sri हैं। Krishna. राधा कृष्ण दोनों दे रहे हैं He's देखो giving to both of राधा them. कृष्ण प्राण मोर जुगल Radha Krishna Pranamori नतिया Yugal मालती Kishore. माला टीप तुम्हार गति ये कौन बोल रहे हैं Who is मंजरी saying? बोल रहे हैं He's saying this. Manjari is saying this. तो उस समय राधा कृष्ण दोनों ही क्या हो गया So at that time, विषय Radha and Krishna, आलम्बन they are in Vishaya-alamban. और मंजरियां हो गए कोई And Manjaris, they आश्रय fall आलम्बन into the category of Ashraya-alamban. तो इसे आलम्बन हो गया So this is और एक Alamban होता है happen. उद्दीपन And the उद्दीपन other thing is कैसे uddipana. What is uddipana? स्टिमुलेशन It's हृदय a की जहाँ पर stimulation inside the heart. विकार आदि उत्पन्न कराती है So it's like और it कैसे बढ़ती है triggers the transformation. ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता It है triggers the विकार transformation. शब्द की क्या अर्थ है So what was word एक vikar सत्ता से means? दूसरे सत्ता से परिवर्तित अवस्था It's को like विकार going कहा through a जाता है transformation is known as विकार vikar. की परिभाषा एक सत्ता से दूसरे सत्ता में जो So like परिवर्तित moving from one स्थिति phase जो to है the next उसे phase विकार कहा is known जाता as है vikar. जिस प्रकार So for example, दूध में when milk, है वो करने से क्या बोले कोई so, जाम जो है so if और you put एसिड जो है germ or लैक्टिक एसिड bacteria, है lactobacillus, नींबू के रस lactic acid जाम जो bacteria है or तो lemon उसमें juice, जैसे when you put उससे in क्या हो गया milk, milk दही बन गया becomes like इसमें एक curd. वस्तु था क्या वस्तु था But दूध there was one, it was और milk, दूध वो अभी क्या हो गया and now that same दही हो milk गया is curd. तो दैट So मीन्स that means, मिल्क अभी और क्या हो गया so what happened to the ट्रांसफॉर्म milk? Milk ट्रांसफॉर्म transformed into the curd. है जो वस्तु दूध में जो It's the वस्तु होती same है thing. दही It's the में same वही है thing. It's the curd. यथा यथा दधि विकारेण है, जिस प्रकार दही So, जो है विकार प्राप्त होकर के so, दूध so विकार like हुआ milk went through तथा transformation. It had vikar, दधि विकारेण and it turned into curd. है, दूध था वो So it was दूध और दही milk. में कोई अंतर नहीं है There's no केवल difference विकार between प्राप्त होकर milk के and curd. अर्थात It's the दूध same विकार thing, प्राप्त होकर but के it just दही went बन through a गया transformation. किंतु यहाँ ये विचार के विषय है So people दूध also दही say बन गया opinion here दही दूध नहीं that छोड़ milk पाई can be transformed into curd, but है curd क्या cannot be मतलब है transformed back into the milk. What does it यहाँ mean? पर जो विचार दिया जाता है The कि opinion that's being shared here भगवान is अपने शक्ति के द्वारा जीव को प्रकटित कर दिया that Lord has है manifested all the jivas from His किंतु power, जीव जो है फिर वो भगवान नहीं बन सकता but the jivas जथा cannot become God. So है, this is what I'm explaining here. दही जथा दुग्ध दही दधि दधि विकारेण ठीक Vivekaran. उसी प्रकार So यहाँ similarly, पर विकार शब्द ट्रांसफॉर्मेशन जो this is the ट्रांसफॉर्म word जो होता है vikar, वो going through कैसे ट्रांसफॉर्म transformation. हो गया ट्रांसफॉर्मेशन है कैसे What is transformation? एक और एक सत्ता से इसके परिभाषा यह है So the definition एक is, शुद्ध सत्ता से so like from है, moving किसी from कारण से one दूसरी phase शुद्ध सत्ता में जो or परिवर्तित हो one जाता है place, moving to उसे कहा another जाता है place, and विकार another section, another phase of life, that is known है। as vikar जैसे transformation. कृष्ण जनित कोई भावों के So, दर्शन so करके for example, Krishna हृदय sees में जो different विकार हुआ moods, and the moods यह that he बुद्धि feel जो in है his heart. कृष्ण विषय होनी चाहिए It's like यदि Krishna needs to be कृष्ण Vishay, कथा नहीं रहे centralized. तो And if वो there is फिर no भी Krishna विषय Katha, नहीं माना जाएगा then it is not valid. है? जैसे आप आप For कोई अपने example, प्रिय की स्तुति करते हो if you love किंतु someone, उससे कृष्ण का कोई संबंध नहीं है but they don't have any relation to फिर भी Krishna, आपके चित्त में यदि विकार हो and then तो you look at उसकी them and it's बुद्धि going through नहीं माना जाएगा transformation, it's like, वह no, उसके लिए it's ट्रांसफॉर्मेशन not, में नहीं आएगा it's not coming in the category of समझ रहे हैं? transformation. फिर करो जैसे मोर पंखा है मोर पंखा कौन धारण So it's करता like है peacock feather. Who puts मोर पंखा peacock कृष्ण धारण feather? कर रहा Krishna puts peacock feather. है कृष्ण मोर पंखा धारण करने से When Krishna wears राधा more आदि peacock गोपियों के हृदय feather, में क्या हुई all the gopis विकार and Srimati क्या Radharani विकार saw हुआ that peacock feather, and ये गोपियां what देख रही transformation हैं कि happened मोर in their पंखा में hearts? जो राधा नाम जो है वो कृष्ण कैसे शिष पर
So धारण करेंगे। they're seeing that the ये देख peacock करके feather, हृदय में जो एक उल्लास they're होता looking very beautiful and है, Krishna, आनंद होता है। and all the अच्छा, gopis तो in ये Srimati Radha, कृष्ण they ने feel joy. धारण करके और कोई व्यक्ति धारण करे But if Krishna does not wear peacock तो उसके feather, विकार if होने, उसके विकार नहीं another करेगा। person wears or the peacock कृष्ण दिशा feather, होनी चाहिए। then there won't be transformation in the बंसी heart क्या of the है? gopis. बंसी So जो for example, बजाते हैं, जिसके flute. बंसी जो धारण करते So the हैं, person who possesses उसके क्या कहा flute, जाता है? बंसीधारी कहा जाता है। Vanshidhari. A क्या person बोलते who हैं? possesses flute is known as बंसीधारी। Vanshidhari. किंतु कृष्ण छोड़ करके But और apart कोई from व्यक्ति बंसी Krishna, धारण करे, if उसके any बंसीधारी नहीं person कहा जाएगा। is possessing flute, you won't call them Vanshidhari समझे? because it's not Krishna. हैं? बंसीधारी जो बंसीधारी किसको कहा जाता है? जो बंसी का Who is धारण करता है। Vanshidhari? A आप person who बंसीधारी possesses हो, a flute. आपके नाम बंसीधारी So नहीं कहा जाएगा। if किंतु you बंसी possess तो a धारण flute, किया we है। won't call you Vanshidhari, but समास में you own a कार, flute, right? बहुवचन आदि समास में भी ऐसे प्रयोग होता है? हाँ सुनो, कि कोई व्यक्ति वंशी धारण कर ले, उसके वंशीधारी So if नहीं कहा any जाएगा। ordinary person वंशीधारी owns a किसको flute, कहते we हैं? won't call them कृष्ण में Vanshidhari. उद्दीपन होना चाहिए। So everything needs to be हाँ सुनो, connected to Krishna. उसी प्रकार Similarly, कृष्ण मयूरपंख का धारण करते हैं। so Krishna wears peacock feather. कृष्ण मयूरपंख का शिश को धारण करते हैं। जब कृष्ण And we are मयूरपंख going का to शिश say, को जब धारण किया, so when he लगाया, wears the उसके crown देख and करके peacock गोपियां feather, के हृदय the में उल्लास gopis हुआ। saw that and they felt उसके तले really विकार हुए। nice feelings क्या within their विकार heart. हुए? They had होठों transformation में in their heart. होंठ फड़फड़ाने लगे। Their lips देखो started to आज shake. श्याम सुंदर कैसे सुंदर It's like Sham हैं? Sundar today. ये मयूरपंख का शिश को धारण करे हुए हैं। They're seeing that oh राधा Sham कुंड Sundar is की having a तट very पर beautiful जब peacock विकार feather हुआ, on their head, बरहा on में his head. मयूरपंख को कृष्ण Yeah. शिश को धारण किए Like हुए Krishna has put peacock हैं। feather on his head. तो ये जो शब्द जो आ रहे हैं, These words that are इसको coming here. देख करके उनके गोपियों के हृदय में क्या हो रहे हैं? So विकार उत्पन्न हो रहे हैं। they're क्या seeing विकार? this, and vikar is happening in the hearts of हृदय में Gopi. उद्दीपन हो रहा है। Like uddipana तो happening. ये It's like मयूर transformation, पंख में जो राधा नाम stimulation. लिखा हुआ है, आज कृष्ण It's like Radha's name जैसे is राधा written जी on that शिव peacock को feather, धारण किए हुए and हैं, they're seeing how Sri Krishna has put राधा Srimati जी शिव को Radharani on his head. धारण कर रहे हैं। उनके ये समस्त लीला जो So उत्पन्न these are हृदय the में उत्पन्न leelas. हो जाता है, They get उसे stimulated इसलिए inside कहा the जाता hearts of है the gopis. उद्दीपन विवाह कहा जाता है। This is Uddipana. जैसे जमुना, For जैसे example, राधा Yamuna. कुंड तट कुंज कुटीर, Radha Kundu Tata गोवर्धन Kunja पर्वत Kutira, जाम Govardha Pandu अतुलित Parvata मधुर Gamana Tira. मलय बतास, ये सब क्या है? So what is these? उद्दीपन विवाह कहा जाता है। They all are क्यों? कृष्ण triggering संबंधी Uddipana. है, They are triggering transformation कृष्ण because they और are जल related to संबंधी है। Krishna. राधा कुंड तट Radha Kunda कुंज Tata कुटीर Kunja Kutira, गोवर्धन Govardhan पर्वत Parvata जामुन तीर। Jamuna Tira. राधा कुंड की नाम सुनते ही So when you hear the हृदय name में of उल्लास Radha होता Kund, है। there's like we क्यों? feel joy in our ना hearts. आज राधा Why? कुंड में भी Because today in Radha Kund, गोविंद Govind, राधा जी के साथ मिल रहे हैं। he will meet Srimati Radharani at Radha Kund. This is the यदि Uddipana, this कृष्ण is the नहीं मिल thought. रहे हैं, But if Krishna is not meeting, तो उद्दीपन नहीं होगा, then there is no Uddipana. नहीं पे माना नहीं जाएगा, It's not valid. क्योंकि हर समय कृष्ण विषय होनी चाहिए। So everything needs to be आप भी राधा connected कुंड to में Krishna. जाते हो, Like we go to Radha स्नान Kund, करते हो, we take bath there, डुबकी लगाते हो, we take a किंतु dip in the ये water उद्दीपन नहीं there. This is है, not Uddipana. हैं? क्यों? कृष्ण Why? विषय होनी चाहिए, हर समय Because ये रखना because चाहिए Krishna needs कि to be in the कृष्ण all विषय perspectives. Krishna needs रति के everything needs to द्वारा be connected to Krishna. चित्त में जो प्रथम जो विकार उत्पन्न The होता first है, transformation that will उसको happen कहा in the जाता है heart, विभाव, और कोई विभाव जो आगे it is जाके विभाव Vibhava, अनुभाव and then it's फिर आलम्बन anubhava, और and then उद्दीपन है। alamban, and then uddipana. This हर is the समय process. कृष्ण विषय होने चाहिए। Everything needs to be connected to Krishna. आप समझ रहे हैं? इसे कहते हैं राधा कुंड तट Radha कुंज Kunda Tata कुटीर। Kunja Kutira. राधा कुंड की तट पर जो कुटीर है, क्या So बोले? there's a kutir, there's a कुटीर आदि, place कुटीर समझते हो? near the Radha Kund, कुटिया जो है, Kutia. कुंज आदि है। It's like राधा कुंड forest, तट small कुंज forest कुटीर, or a small room. गोवर्धन और पर्वत। Govardhan देखो Parvata, गिरिराज गोवर्धन, Govardhan Mountain. गिरिराज गोवर्धन किसके लिए हो रहा है? सब कृष्ण विषय होनी चाहिए। So what is कृष्ण के Giriraj एक नाम Govardhan? है गोवर्धन धारी, So Krishna's name is जिसने Govardhan गोवर्धन को Dhari, धारण किया। who lifted अब Govardhan कोई Parvat. व्यक्ति गोवर्धन शिला के लिए धारण करे, उसको So if गोवर्धन person धारी नहीं picks up कहा a small जाएगा। rock from Giriraj जब हम Govardhan, you निकालते हैं won't भगवान को याद call them करते हैं Giriraj कि कृष्ण Dhari. तुमने कौन सा गिरिराज गोवर्धन धारण किया?
And then the friends asked, Pankaj Giriraj Govardhan he Karte. said, "What Giriraj did you lift up? We all lift up हाँ? Giriraj every day." The friends जैसे asked. ब्रजवासी So लोग गोबर Brajvasi करते हैं, people, गोबर के द्वारा when they गोवर्धन are preparing बनाते cow हैं, dung, पर्वत they बनाते make हैं, a हैं? mountain, Govardhan तो mountain उसे भी of the cow गोवर्धन धारी dung. कहा जाए, बोले नहीं। And is that Govardhan Dhari as इसके लिए well? केवल कृष्ण के लिए है। No, that word, that क्योंकि designation is only for Krishna. रसशास्त्र में विषय के ऊपर So in the Rasa प्रेफरेंस दिया Shastras, जाता है। it's like this हैं? is being centralized, focused, more focused इसलिए towards प्रेम Krishna. विषय वृत्ति के द्वारा जो हृदय में प्रथम जो विकार The first होता है, transformation that मन happens में जो within the प्रथम विकार heart, होता है, उसी की कहा जाता है that is known उद्दीपना as जैसा। uddipana. हैं? And it only happens when ये everything is संबंध connected to इसमें Krishna. राधा कुंड तट So कुंज it is Radha कुटीर Kunda Tata Kunja गोवर्धन Kutira, पर्वत Govardhan जामुन Parvata, तीर। Jamuna Tira. जामुन तीर माने जमुना तीर। What is Yamuna Tira? Yamuna Tira. जमुना के तट पर सभी लोग तो भ्रमण करते It's हैं, like on the corner of Yamuna. A lot of people are roaming around there. किंतु But कृष्ण विषय होनी चाहिए। but Vishay should be Krishna. The topic should be of Krishna. Everything should be connected to Krishna. कैसे वो But जमुना के तट so पर thinking न्याय आदि how करते हैं, Krishna used to play near Yamuna and perform वास्तविक leelas कृष्ण near क्या रहा Yamuna. जाता है? So in all the situation, all the leelas, Krishna needs to be in the perspective. गोवर्धन Govardhan गोवर्धन Parvata, पर्वत Jamuna Tira. जमुना जामुनती खग मृग कुल मलय बतास खग मृग कुल Hangamika जितने Gul. पशु पक्षी मृग आदि Like ये सब rabbits, उसी पर होता है। deers, they all exist ये सब there. कृष्ण के संबंध है, Why? Because they all are कृष्ण related to संबंधी Krishna. होनी चाहिए। Everything needs to be related to Krishna. पशु पक्षी गोविंद के रूप दर्शन All करके the कैसे animals, flora and हैं? fauna, they प्रेम all आदि get करके delighted. They all dance in कैसे the deep moon of love. संवेद हो जाते हैं। All the कृष्ण के animals, वेणु वाणी rabbit, सुन करके deers, they all get वो सब enchanted by सब the पशु sound पक्षी of कैसे flute of स्थिर हो Krishna, जाते and हैं? it enters their heart and they dance. वृंदावन They get absorbed सुखम in the विप्रलय divine love. कीर्ति जद देवकी सुत पदाब्जवसी गोविंद वेणु मोहन मयूर नित्यम गच्छादि संग वर्तमान समस्त सततम सुखदेव गोस्वामी पाद So करेंगे Sukadeva Goswami Pad is हे saying महाराज परीक्षित that, hey Maharaj कृष्ण जब Parikshit, वेणु वादन करते हैं when Krishna plays the बजाते हैं flute, हैं? और कृष्ण के वेणु वादन सुन करके to listen to the flute of वृंदावन के Krishna, जितने भी पशु पक्षी when listening to the flute of Krishna, एकदम all तन्मय हो the जाते हैं। animals, all the कैसे animals in आनंद में टकटक लगा Vrindavan, करके like गिर रहे हैं। peacock, all the कृष्ण लीला animals, सुन they just dance very वृंदावन nicely. सभी All the भूमि peacocks spread their feathers and they dance. इसलिए वृंदावन के मोर मैनी के देखो So the peacock गिरिराज गोवर्धन की in शिखर से Vrindavan, शिखर समझते हैं become the so from the peak of the नीचे mountain of ऊपर Giriraj नहीं जा सकते, Govardhan, they come और down to the आकर के mountain पंखा फैला करके and they ऊपर spread चढ़ते their हैं। wings, their feathers, and they They perform spread beautiful their dance. tails and start to They dance। spread their tails, feathers, and they start इससे to भंग dance. हो जाते हैं। ये सब जो उद्दीपन कहा जाता है। This is all Uddipana. मलय बतास मलय माने अत्यंत शीतल हवा, It's like very calm और हवा air. उस समय के इतने सुंदर समीरण The हवा air जैसे is धीरे very धीरे beautiful and it मानो moves very कृष्ण की slowly. ही सेवा करती हुई And it's धीरे like धीरे the प्रवाहित air is होती serving Krishna है। and flowing according to the अर्थात desire of राधा Krishna. कृष्ण की मिलनजनित सुगंध So when वह Radha and Krishna हवा meet, है the क्या क्या कर रहे हैं? प्रवाहित करके लेकर के आ रहे हैं। and it's like beautiful smell, beautiful aroma in the air manifests automatically. प्रभुदानंद सरस्वती पाठ कर रहे हैं क्या? Prabhupada Saripati Pad says, क्या श्लोक? हैं? जिस दिशा में श्रीमती राधिका खड़ी रहती है in the direction that Srimati मैं Radharani बार stands, बार प्रणाम करता I do offer my humble obeisances and pranams to हूँ। that जैसे direction. क्या? जब किंचित वो क्या बोले? ये समझ जो दिखा है So this is all being explained here. कैसे लोग हैं जब के कृष्ण Uh, बोलते को लोग का है इसके आगे वो श्लोक जो है जिस दिशा में राधा जी So in the विराजमान है direction that Srimati Radharani is there, जैसा कदापि वसुरंदन चलनत्त धन्ना
No devta can play with the clothes of Srimati Radharani. Only the god of air, Pavan Devta, he touches the uh, clothes of Srimati Radharani and plays. And it also is a medium from which the beautiful aroma and smells move around. So it's like very divine smell coming from Srimati Radharani body, and the air is the medium through which that travels. And this luck, and Krishna is saying, the god of air is very lucky. There's like no yogi, not even Brahma, Shiv, no one can have this mood. जोगिंद्र दुर्गम गति मधुसूदनोपि तत्शास्तु नमो विश्वाणु भवति सुकृतम्। इसलिए इस काटे ये समझ मलाई के जो कार्य So it is राधा saying, कुंड चक्र Radha Kunda Tata Kunja Kutira, Govardhan Parvata Jamuna Tira. अगमिक कुल मलय बतास है मलय बतास एक शब्द है मलय माने शीतल So मलय Malay, ठंडा it means calm, है calm and मलय calming, चंदन के soothing. सुगंध The smell of अर्थात Chandan, सुगंध जे स्निग्ध कमनीय it's very कमनीय beautiful. और It's very ये समझ सुंदर जो peaceful. गंध जो है आज लेकर के आते And these beautiful हैं aromas and smells are मलय moving through बतास the air. ये Malaya सब Vat. उद्दीपन विभाग कहा जाता So है। this is all coming under तो हो गया क्या Uddipana. विभाग अनुभव Vibhav, शास्त्रीय Anubhav, व्यभिचार Sasti, ये vyabhichari. चार प्रकार So के these क्या are कहा the जाता है four types of इंग्रेडिएंट्स ingredients of bhakti. चलो आगे और Okay. फिर विभाग अनुभव And then there's Vibhava, शास्त्रीय Anubhav, there's like व्यभिचारी subdivisions of everything, Sasti, विभाग में बताया vyabhichari. गया है आलम्बन उद्दीपन There's Vibhav, विषय-alamban Alamban, Uddipana. asraya-alamban There's like different categories and signifies subdivisions of everything. फिर विभाग के द्वारा चित्त जो उनके साथ जो चलते हैं उसके अनुभव कहा जाता है So अनुभव Bhav, अनुभव Anubhav. अनु माने पश्चात अर्थात भावों के पीछे पीछे जो क्रिया आदि होती है उसके अनुभव कहा जाता है So Bhav, सरल में Anubhav समझने की चेष्टा करो is the okay. भावों Try. के पीछे पीछे चले चलने So if वाले you जो क्रिया go आदि after होते the हैं उसके moods अनुभव and do कहा the जाता deeds on based on that, that's है known as Anubhav. जैसे धूल कणा जैसे आप चल रहे हो Like you're walking, आपके पीछे पीछे धूल कणा चलते हैं and गुरु behind चलते हैं you, उसके पीछे पीछे the कौन चलता dust है is coming, the dust is शिष्य लोग walking. चलता है And for example, Guru is तो उसके walking, पीछे पीछे disciples are चलो walking आगे behind the नहीं Guru. They walk behind the Guru, don't walk in front. जब विभाव के So, चित्त so की this विवाहित is करके फिर जो जो क्रिया आदि so उनके all पीछे the पीछे deeds that चलते हैं उसके happen अनुभाव under कहा the जाता guidance, it's known as है Anubhav. अनुभाव अनु माने पश्चात भाव माने Anubhav. भाव Anu means भाव के पीछे previous, पीछे जो and क्रिया आदि Bhav चलते हैं अनुभाव कहा it जाता means mood, feelings. So it's है like Anubhav. जैसे कथा आदि श्रवण आदि के द्वारा So while listening to Hari Katha, for कृष्ण के example, रूप गुण लीला आदि के स्मरण आदि के हृदय में जो विकार उत्पन्न हो जाते हैं we have a अनुभाव transformation in our hearts. We अनेक can think प्रकार के about विशेष Krishna, we केवल think about Krishna तैतीस Leelas. प्रकार के जो है There are संचारी 33 भाव types हो of जाता है Sanchari उसमें तो Bhavs. अक्षय अनुभाव में आ जाता है द्वादश प्रकार के अनुभाव दिखाए जाते हैं And there जब are बात Dwadasa होती types है of Anubhav. I'll explain these later. Now we have to go for Guru Aarti.